Okay. रहने वो डायरेक्ट उधर भी गया तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं। वो कैमरा से ठीक करेगा क्या? ये देख इधर वो ये हो रहा है। नहीं 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 मैं बस परफेक्ट। Good morning, friends. Sorry for the interruption. There's something happened in the computer system. I hope YouTube public you are able to hear me clearly. Audio just type quickly in the chat box. So if there's an issue with the audio, I'll come to know. तो लिए पक्का ऑन रखना है ना इसको, मतलब वो रिकॉर्डिंग गड़बड़ नहीं होगा ना। YouTube public, are you able to hear audio clearly? Okay. Yes. Okay. So ठीक है, चलो. We kickstart with the activity-based costing. We understood absorption costing, which was one of the method of linking overheads to the cost object. ऐसा नहीं कि overheads हमें cost object में या cost of production में include नहीं करना है. Overhead is an indirect cost. There is a difficulty in linking overheads to the cost object. Everyone understands it, but does not mean you do not link overheads to the cost object. This is one of the simplest chapter, smallest one. I am expecting a theory question this time on एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट एंड एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग, तो उसको भी हम करेंगे, खत्म हो जाएगा आधे घंटे में इसको, मतलब सम तो नहीं हो पाएगा ऑब्वियसली, बट इट्स अ क्वाइट इजी चैप्टर इन कंपैरिजन टू ओवरहेड चैप्टर, क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर रहता है इधर, हाउ डू यू वांट टू लिंक ओवरहेड्स टू द कॉस्ट ऑब्जेक्ट. तो हमारा पूरा गेम किसके ऊपर चल रहा है? बोले वापस एरर आ रहा है यार, ये कहीं तो उसको नमन को बोल चेक करने का है. हाँ, ऑडियो का एरर है. ए यूट्यूब पब्लिक, आर यू एबल टू हियर मी? आई डोंट नो, देयर इज एरर इट इज शोइंग हियर. वॉइस इज क्लियर? ओके, ठीक है. सो the entire game is how do we link the indirect cost, that is overheads, to the cost object. इधर नहीं आएगा क्या? ओके, ठीक है. So in traditional costing what we did, overheads were linked first to the production department, to the service department. That is the first thing that we did, linking of overheads to production department and service department. Then the service department was reapportioned to the production department, and from production department we did something called as absorption. याद है? Overheads were absorbed using some suitable basis. We calculated absorption rate, जिसको हमने standard rate बोला था in a standard costing chapter, right? और वैसा करके हमने overheads को link किया, and then we calculated absorbed overhead for actual output, how much we should have incurred, how much cost we should have incurred, उसको हमने absorbed overhead बोला. Instead of doing such a lengthy activity of linking overheads first to departments and then from departments we absorb it over the cost object, we can do it much more directly. That is, we can link overheads. So पिछले कंप्यूटर को कनेक्टेड है तू, इसको सिर्फ डिस्टर्ब मत कर. So we will link overheads to cost object in a much easier fashion. Under activity based costing, linking of overheads to the cost object is going to happen through something called as a cost driver.
इतना सिंपल है। कॉस्ट ड्राइवर का मतलब क्या है? अ फैक्टर बिकॉज ऑफ विच अ कॉस्ट इज इंकर्ड। सो हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर ओवरहेड के लिए, मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल आई से प्रोक्यूरमेंट रिलेटेड ओवरहेड्स, तो उसमें क्या क्या आएगा? आई से प्रोक्यूरमेंट इज माय कॉस्ट पूल, ओवरहेड है ये, उसको फैंसी लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट पूल। पूल इज ग्रुप। सो प्रोक्यूरमेंट रिलेटेड ओवरहेड्स, उसमें क्या आएगा? आपकी परचेज डिपार्टमेंट की सैलरी आएगी, वेंडर डेवलपमेंट आप कर रहे हो, सप्लायर डेवलपमेंट कर रहे हो तो सप्लायर डेवलपमेंट का जो कॉस्ट आएगा वो आएगा आपका। प्रोक्यूरमेंट रिलेटेड और कोई कॉस्ट होगा तो वो आएगा। सो एक मैंने कॉस्ट पूल ले लिया, उधर क्या करेंगे, सारे के सारे रिलेटेड कॉस्ट को हम अक्यूमुलेट करेंगे, टोटल लेंगे, एंड फॉर एवरी कॉस्ट पूल we will identify a factor because of which a cost is incurred. उस फैक्टर को हम बोलेंगे कॉस्ट ड्राइवर। वो आपको क्वेश्चन देख के ही समझ में आएगा कौन सा चीज कॉस्ट ड्राइवर है। वो क्या करना पड़ेगा भाई? उधर वो ऐसा आ रहा है, वो अभी रहने दे क्या? ठीक है, उसको नॉर्मल कर ले, सिर्फ वो ब्रेक में चेंज कर ले उसको। So we have to identify a factor. The entire game is what? Identifying a factor. उस फैक्टर को मैंने क्या बोला रे बच्चों? कॉस्ट ड्राइवर। सो ये मेरे ओवरहेड कॉस्ट है जो मुझे लिंक करने हैं, किसको? कॉस्ट ऑब्जेक्ट को। सो वी विल फाइंड अ हेलो हेलो हेलो, हाँ। सो लिसन अप केयरफुली। So I repeat, for every cost, we are gonna identify a factor using which we will link the overhead to cost object. So the factor using which we link a overhead to the cost object is known as what? Cost driver. It is linked through resource cost driver, activity cost driver. वो बकवास है, उसको कुछ याद मत रखो, ड्राइवर रहेगा। तो cost driver is a factor. For every cost driver we will calculate cost driver rate, which is in simple language total overhead of that particular activity divided by total of activity. For example, यहां पर मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए। मशीन सेटअप रिलेटेड कॉस्ट आपने आइडेंटिफाई किए। मशीन सेटअप इज योर ओवरहेड, सेटअप रिलेटेड कॉस्ट, हम उसको बोलेंगे एक्टिविटी। सेटिंग अप ऑफ अ मशीन इज माय activity. Identify total overhead relating to setting up of a machine. So whatever is electricity required, insurance का apportionment करो, depreciation का apportionment करो in ratio of number of hours or whatever the factor. So identify overheads regarding machine setup. So identify what? Cost driver. Cost driver is number of setups that you have done. So in a year or in a month, how many setups are done? That becomes my cost driver. So I get a cost per setup, or I get a cost per setup hour. So you identify activity setting up, identify cost of that activity, and then identify suitable cost driver, and you get a rate per hour, per unit, per setup, per order, per something. That is cost driver rate. And then ask each product or each cost object has consumed how many activities. So I say total 20 setups are done. Out of 20 setups, 3 setups are for cost object A or product A, 9 setups are for B, and some setups are for C. Once you get how many setups are done for each cost object, my friend, linking is very easy. It's a simple common sense. Itna cost, itne, it's cross multiplication. This is a total cost for these many cost drivers. So for one cost driver, how much is a cost? Usko bole cost driver rate. So once I get a cost driver rate, identify how many cost drivers are consumed by respective cost object. Khatam. Linking karna hai.
सो परचेस ऑफ मटेरियल अगर है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस्ड, वेयरहाउसिंग है तो नंबर ऑफ आइटम्स इन स्टॉक और वॉल्यूम ऑफ वेयरहाउस, एरिया ऑफ वेयरहाउस दैट इज यूज्ड बाय अ पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट। आइडेंटिफाई सूटेबल फैक्टर, क्वेश्चन देख के ही आप ये फैक्टर आइडेंटिफाई कर सकते हो। यहां पर आपको कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा। पहले क्या करोगे आप, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट। हाउ विल यू प्रेजेंट अ कॉस्ट ड्राइवर रेट का कैलकुलेशन? एक्टिविटी, उसका नाम लिखो, टोटल कॉस्ट इंकर्ड फॉर दैट एक्टिविटी, नंबर ऑफ एक्टिविटीज, पहले एक्टिविटी का नाम लिखा, टोटल कॉस्ट ऑफ दैट एक्टिविटी, नंबर ऑफ activities that are done, number of setups, number of hours or area used, whatever, cost driver rate, ये आपका पहले cost driver rate आ गया। Then second segment, allocation of overheads to the respective cost object, particular cost object A, B, C, product A, B, C, customer line A, B, C. Cost object can be customer, cost object can be finished goods produced, cost object can be distribution channel, cost object can be a factory, cost object can be a group of products, anything. So I will take a cost, overhead cost, उसको cost object से link करेंगे using a cost driver. Are you clear? So you have to just show the working in a question. It is nothing but a cross multiplication. You can do it directly, but you do it directly, marks will be 0. You have to show the calculation of cost driver rate and then apportionment of overhead cost. But typical, आपको cost activity देख के मिल सकता है। इंस्पेक्शन है तो नंबर ऑफ इंस्पेक्शन टाइम पर आइटम कितना लगता है, क्वालिटी टेस्टिंग आवर्स, so it will be all hours, number of orders or something like that. All the activities that are identified in an organization are divided into 4 parts. This is the first question that I'm expecting. 3-4 more key theory questions that I'm expecting. बहुत इसके ऊपर बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आके जा चुके हैं। आपको करना क्या है, 2 चीज करनी है इसके बाद। जितने भी आपके मॉड्यूल में क्यू सीरीज के क्वेश्चंस है, सारे के सारे क्यू सीरीज के क्वेश्चंस करो। प्लस मैंने एक आपको पीडीएफ फाइल शेयर किया था, I'll share it again on your Telegram channel. पीडीएफ फाइल शेयर किया था जिसमें क्वेश्चंस और आंसर्स थे, सिर्फ आप गो थ्रू करना, नो नीड टू सॉल्व ऑल्सो फॉर दिस। इफ यू हैव अ बेसिक कैलकुलेशन सेंस देयर इज नो नीड टू सॉल्व। क्यू सीरीज कंप्लीट, क्यूआरएम आपके ऐप पे ऑलरेडी होगा। एग्जाम के क्यू सीरीज के क्वेश्चन सारे गो थ्रू करो। व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग दिस टाइम फॉर May 23 इज नॉट अ न्यूमेरिकल वन, व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज व्हाट थियरी क्वेश्चन, बिकॉज आपने अगर कंसिस्टेंटली देखा होगा तो 10-10 मार्क का क्या कर रहा है वो, न्यूमेरिकल्स पूछ रहा है। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछ के हो चुके हैं, नया उनको कुछ चाहिए ना तो ये थियरी क्वेश्चन पूछेंगे। पहला चीज, आइडेंटिफाई डिफरेंट एक्टिविटीज इन अ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एक्टिविटीज होते हैं वो ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में आ सकते हैं। देयर आर सर्टेन एक्टिविटीज विच आर विथ रेफरेंस टू क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। क्या बोला मैंने? विथ रेफरेंस टू क्वांटिटी प्रोड्यूस। एक्टिविटी के लिए कॉस्ट इंकर हो रहा है, एक्टिविटी इज अ टास्क, some physical activity that you are doing is a task for which you are incurring a cost. So task could be as simple as, let's say you have a steel sheet, you have to cut down the steel sheet to give it a particular shape, or you have to set up a machine, it is a task. You have to order a material, it is a task. You have to deliver finished goods to a customer, it is a task. You have to repair a machine, it is a task. For every task or every activity there is a certain cost which is incurred. But these activities or these tasks are divided into 4 broad categories. Number 1, unit level activities. Unit is not to be understood as a facility. Unit is cost object per unit. So these are the activities for which the consumption of resources can be identified with quantity of units produced. So this is with reference to output. कितना output आया है? The cost of some activities are strongly correlated with the number of units produced. So ये एक्टिविटी में क्या क्या आ सकता है? समथिंग लाइक इंस्पेक्शन, हर एक यूनिट का आपको इंस्पेक्शन करना पड़ रहा है, या इनडायरेक्ट मटेरियल का जो यूज हो रहा है, जितना ज्यादा क्वांटिटी उतना ज्यादा इनडायरेक्ट मटेरियल यूज होगा, समथिंग लाइक दैट. सो समथिंग विच इज लिंक्ड टू क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री, एक्टिविटीज विच आर लिंक्ड टू क्वांटिटी प्रोड्यूस. Number 2, there are certain activities which are done only when the new manufacturing batch is created. तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बैचेस में प्रोडक्शन होता है. तो हर बार जब आपको नया बैच का प्रोडक्शन करना है तो आपको कुछ एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, लाइक वो बैच के लिए मशीन्स का सेटअप करो,
वो बैच के लिए प्रोडक्शन शेड्यूल बनाओ, वो बैच के लिए रॉ मटेरियल अरेंज करो, वो बैच के लिए डिलीवरी अरेंज करना है. सो these are activities which are carried out for starting a new manufacturing batch. नहीं तो आप लिखोगे क्लासरूम का बैच. So you have to order a material. Let's say batch by batch आप material order कर सकते हो, मशीन का सेटअप करना है, inspection only when the batch output is there. So these are batch level activities. तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, cost are incurred with reference to number of batches. Third level of cost is प्रोडक्ट लेवल. प्रोडक्ट लेवल मतलब जब आप नया प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हो. बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना, प्रोडक्ट लेवल को क्वांटिटी लेते हैं. प्रोडक्ट लेवल नया प्रोडक्ट डिजाइन करने का कॉस्ट. दिस इज बेसिकली R&D. न्यू प्रोडक्ट आपको डेवलप करना है तो उसका कॉस्ट. द कॉस्ट ऑफ सम एक्टिविटीज आर ऑफर्ड ड्रिवन बाय क्रिएशन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट लाइन एंड इट्स मेंटेनेंस. इट्स बेसिकली कॉल्ड द लाइफ साइकिल कॉस्टिंग. नया प्रोडक्ट का डिजाइनिंग करना है, उसका प्रोटोटाइप बनाना है, उसका कमर्शियल टेस्टिंग करना है, उसका फिजिबिलिटी टेस्टिंग करना है, उसको कस्टमर्स को जाके सैंपल्स देके कस्टमर का फीडबैक लेना है आपको, फिर उसमें चेंजेस करने हैं, फिर रेगुलेटर के अप्रूवल्स लेने हैं. ऐसे नया कार लॉन्च करना है तो आपको रेगुलेटर के पास जाना पड़ेगा, उसकी क्रैश टेस्ट करवानी पड़ेगी, मटेरियल का टेस्टिंग करना पड़ेगा, उसके लिए सप्लायर डेवलपमेंट करना पड़ सकता है. So all such activities require certain cost. These are product level activities. And finally, facility. Facility मतलब manufacturing factory facility. These are the costs for sustaining the manufacturing process and cannot be attributed to individual product. So आपकी जो cost है, some cost will be with reference to output, some cost will be with reference to batch, some cost will be with reference to creation of a new product, and some cost will be with reference to what? Facility, that is manufacturing capability of a factory. तो आपको ये 4 लेवल की कॉस्ट आपको आनी चाहिए. थियरी क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज. तो यू टू राइट एक्टिविटी नेम, ब्रीफली एक्सप्लेन, गिव फ्यू एग्जांपल, गेट 5 मार्क्स, गेट लॉस्ट. मतलब आफ्टर राइटिंग एंटायर पेपर. बेनिफिट्स ऑफ एबीसी टिपिकल. नाउ दिस इज बीकॉम स्टाइल. यहां से आगे जो है बीकॉम स्टाइल है. एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, फिर एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट. इट्स अ टिपिकल बीकॉम. देयर इज लॉजिकली नो पॉइंट इन आस्किंग सच क्वेश्चंस, बट you thank me after you get the question. We focus on activities, not on product. Wow. It is more accurate than traditional costing because we are going to the minutest possible level. मैंने ओवरहेड चैप्टर में भी आपको बोला था, अगर आपको ओवरहेड्स को लिंक करना है ऑब्जेक्ट को, तो इट इज ऑलवेज बेटर टू गो टू व्हाट, लोएस्ट पॉसिबल लेवल rather than a department level. You go down to the lower level. Here we are going to the much lower level. छोटे छोटे एक्टिविटीज हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं. इट रिजल्ट्स इनटू बेटर मैनेजमेंट. अभी कुछ तो लिखना चाहिए. ये सारा सिस्टम इंप्लीमेंट करने के लिए आपके पास प्रॉपर ईआरपी होना चाहिए, पढ़े लिखे लोग होने चाहिए जो आइडेंटिफाई करे. सो इट इज मोर एक्सपेंसिव. इट इज नॉट हेल्पफुल फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि यू डोंट हैव टू मेनी एक्टिविटीज इटसेल्फ. इट मे नॉट बी अप्लाइड टू ऑर्गेनाइजेशन विद वेरी लिमिटेड प्रोडक्ट्स. वही तो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन. अभी लिखना है ना कुछ तो 4-5 पॉइंट, तो बीकॉम सेल बड़ा ले, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन एंड वेरी लिमिटेड प्रोडक्ट्स. दिस इज गिवन इन द आईसीए मॉड्यूल. मैंने वहां से कॉपी किया है. Selection of most suitable cost driver may not be useful. मतलब you might make an error in selecting a cost driver. What is the problem of this with ABC? You make an error. This problem is there in everything. But अब लिखना चाहिए. This is what academicians are. There should not be a question like write a short note on this and write advantages and disadvantages. But ठीक है, कुछ कर नहीं सकते. To implement a ABC, you need to train your staff. You need to define your processes. हर एक एक्टिविटी का डेफिनेशन निकालना पड़ेगा, एक्टिविटी का ड्राइवर सिलेक्ट करना पड़ेगा और कॉस्ट को असाइन करना पड़ेगा. मतलब एबीसी में जो करना है वही लिखना है. ट्रेडिशनल कॉस्टिंग, एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग, ये अनदर हॉट क्वेश्चन दैट इज आई एम एक्सपेक्टिंग. ओवरहेड्स आर फर्स्ट लिंक्ड टू डिपार्टमेंट्स, ओवरहेड्स आर लिंक्ड टू एक्टिविटीज. सो हियर एक्टिविटीज बिकम अ डिपार्टमेंट. देयर आर ओनली 2 लेवल ऑफ एक्टिविटीज अंडर एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग, प्रोडक्शन यूनिट लेवल क्वांटिटी बेस्ड and a facility level. There was no concept of batch level activities and product level activities. Here there are 4 level: unit level, batch level, product level, and what? Facility level. लिखने का छोड़ने का. The method relates over it to the cost centers, that is locations or departments. It is not realistic. This is more realistic. Overheads can be used to a certain cost of product. This can be used in services also. ये अच्छा है.
क्योंकि यहां पर हम प्रोडक्शन वाइज नहीं जा रहे ना. अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यू कैन आइडेंटिफाई कॉस्ट ऑफ कस्टमर, particular distribution channel or a particular segment, something like that. It is more wider. अब चालू होता है टिपिकल एग्जाम, ABM. मोस्ट लाइकली दिस इज एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट. इट इज नथिंग बट ABC. वहां पर सारा चीज लिखेंगे हम, बट दिस इज मैनेजमेंट. टू मैनेज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग व्हाट वी रिक्वायर? एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट. तुम पागल हो जाओगे अभी ये सुन के. ABM is used to describe cost management application of ABC. तो टिपिकल जहां पर ABC खत्म होता है वहां पर ABM शुरू होता है. This is typical. ABC is a costing tool to manage a cost of activity level. The use of ABC as a costing tool is known as activity based management. BCom course perfect. ABM is a discipline that focuses on efficient and effective management of activities. ऐसे बड़े बड़े शब्द फेंको ना. It utilizes a cost information gathered through ABC. वही तो मैंने बोला ना, ABC क्या करेगा? आपको इंफॉर्मेशन दे देगा कि ये प्रोडक्ट कॉस्ट ऑब्जेक्ट का इतना कॉस्ट है, उसको आप यूज करके कॉस्ट रिड्यूस करोगे, कुछ प्रोडक्ट्स का आप डिसकंटिन्यूएशन करोगे या कुछ प्रोडक्ट्स में आप चेंजेस करोगे. एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट. एबीसी ने आपको क्या दिया? इतना इतना खर्च हो रहा है, फिर आप बोलते नहीं नहीं ये खर्च ज्यादा है, ये अनवांट. हम यहां पर क्या करेंगे? सारे एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करेंगे दो कैटेगरीज में, जो आपने एसएम में शायद किया होगा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में. एक्टिविटीज टू पार्ट्स, वैल्यू एडेड एक्टिविटीज, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज. जो एक्टिविटीज कस्टमर को वैल्यू ऐड कर रही है या प्रोडक्ट को वैल्यू ऐड कर रही है या इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू ऐड कर रही है, उनको हम बोलेंगे वैल्यू एडेड एक्टिविटीज. मतलब हम हर एक एक्टिविटी को गो थ्रू करेंगे और चेक करेंगे कि ये एक्टिविटी हमने अगर डिसकंटिन्यू किया तो कुछ एंड प्रोडक्ट पे फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है, चल निकल. नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी, इसके बिना भी तुम्हारा प्रोडक्शन हो सकता है क्या? इसके बिना भी माल बेचा जा सकता है क्या? इसके बिना भी कस्टमर को कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं. तो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी. सो ABM is using ABC. It's like simple. You go to pathology. एक analogy दे रहा हूं. You go to pathology to do your blood test, urine test or whatever the tests are. पैथोलॉजी का रिपोर्ट आता है, उसके बेसिस पे डॉक्टर क्या करता है? आपको प्रिस्क्रिप्शन देता है. सो डॉक्टर्स वर्क बिगिंस वेयर पैथोलॉजी वर्क एंड्स. So pathology is like your ABC, which is doing some, I know it is pathetic, but it will help you to remember and write something in the exam. It's a theory question. इसमें कुछ न्यूमेरिकल कुछ नहीं है. न्यूमेरिकल आया ना तो मैंने आपको बोला ना, आपको सिर्फ कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालो, क्वेश्चन देख के आपको समझेगा कॉस्ट ड्राइवर रेट, एंड देन व्हाट? Apportion the cost in the ratio of that consumption of cost driver. So ABM is further development of ABC. ABC खत्म होने के बाद ABM आता है. C comes before M. ABC refers to attributing a cost to the cost unit on the basis of certain factor, that is activities. For each activity, it is necessary to identify cost driver. पूरा ABC लिख रहे हैं हम. ABM analyzes and manages the cost driver. ABM analyzes and manages the cost driver. तो हम ये cost driver ठीक यूज किया है क्या हमने? ये एक्टिविटी को हम कंटिन्यू करना चाहिए क्या? ये एक्टिविटी को डिसकंटिन्यू किया तो उसका कुछ इंपैक्ट आएगा क्या? It's more to be implemented rather than to ask a question. Like psychology के ऊपर आप theory questions पूछोगे, write a short note on psychology or other thing. It's boring. It's you need to explain, you need to understand through examples. So rather than defining ABM, you take an example, you take a case study and discuss it. But I can't. That is not in the syllabus. In the process, ABM also analyzes. हाँ, ये मैं बोला, यहाँ पे आ गया. Value added activities and what? Non value added activities. तो उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, मैंने नीचे दिया है. ABM का प्रोसेस देखो, पूरा वापस वही है. Identify major activity areas. Determine the cost driver. Creation of cost pool and cost drivers linking to activities and resources. वापस वही. Various analysis involved in the activity based management. Cost driver का analysis करो. Analysis करो मतलब वो सही cost driver लगाया क्या? उसका कैलकुलेशन सही तरीके से हो रहा है क्या?
हर एक एक्टिविटी का एनालिसिस करो। किसमें एक्टिविटी का एनालिसिस होगा? वैल्यू एडेड एंड व्हाट, जितने भी एक्टिविटीज है। एबीसी में कितने टाइप की एक्टिविटीज है? 4। यूनिट लेवल एक्टिविटीज थी, बैच लेवल थी, प्रोडक्ट लेवल थी एंड व्हाट, फैसिलिटी लेवल एक्टिविटीज थी। उनको हमने क्या किया? ग्रुप कर लिया, वैल्यू एडेड एंड नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। सो द वैल्यू एडेड एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर इंडिस्पेंसिबल, मतलब उसके साथ आप डन, मतलब इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। In order to complete the process, the customers usually are willing to pay in some form or the other for these activities. So polishing a furniture by a manufacturer dealing with the furniture is a value added activity. नॉन वैल्यू एडेड मतलब इससे कस्टमर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कस्टमर मतलब ये एक्टिविटी नहीं कैरी आउट किया तो भी आपका प्राइस सेम रहता है। नॉन वैल्यू एडेड रिप्रेजेंट्स द वर्क दैट इज नॉट, ये अच्छा है, theory nahi hai, but in real life also you need to identify the factors which do not add a value to the entire process. So why do you waste the time? So NVA is representing the work that is not valued by external customers or internal customers or internal organization. NVAs do not improve the quality of function of the product. तो उसके साथ क्या करना चाहिए? अपने उसको इग्नोर करना चाहिए, कैरी आउट नहीं करना चाहिए। Moving materials and machine setup are examples of what? Non-value added activities. अगर आप उसको कुछ तरीके से रिमूव कर सकते हो, आप बोलेंगे मूविंग मटेरियल को रिमूव कैसे कर सकते हो? ट्राई टू एंश्योर दैट मटेरियल गोज डायरेक्टली टू द लोकेशन वेयर अ प्रोडक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस। इफ यू कैन इम्प्रोवाइज समहाउ, जहां पे प्रोडक्शन है वहां पर मटेरियल डायरेक्टली आ गया तो मूवमेंट ऑफ मटेरियल कैन बी रिड्यूस्ड। लेट्स से आपका फैक्ट्री एक जगह पे है और आपका रॉ मटेरियल का स्टोर कुछ दूसरे जगह पे है, वहां से आपको मटेरियल मूव करना पड़ रहा है, दैट इज नॉट एडिंग अ वैल्यू। इफ समहाउ यू कैन मैनेज मटेरियल एट द सेम लोकेशन, इट कैन बी, मतलब वो मटेरियल का जो मूवमेंट हो रहा है उससे कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही ना, तो आप उसको एलिमिनेट करने का कोशिश करो। ऑल नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज ट्राई टू एलिमिनेट देम, सो ऑटोमेटिकली यू विल अचीव अ कॉस्ट रिडक्शन। एंड देन परफॉर्मेंस एनालिसिस। सो 3 चीजें हम करेंगे, हर एक कॉस्ट ड्राइवर का एनालिसिस करेंगे, एक्टिविटीज को एनालाइज करेंगे और फिर फाइनली परफॉर्मेंस देखेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी होगा या कॉस्ट का रिडक्शन हो रहा है क्या, उसका एनालिसिस करेंगे ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, और वी विल कंपेयर आवर परफॉर्मेंस विथ अदर कंपनीज, राइट। वापस इसका बेनिफिट क्या है? यूज ऑफ एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट इन अ बिजनेस, एबीएम का यूज क्या है? ये सारा चीज किया है आपने, ऑब्वियसली कॉस्ट रिडक्शन होगा। हाउ विल कॉस्ट रिडक्शन बी अचीव्ड? नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज अगर मैंने इग्नोर की, उसके ऊपर खर्च जो हो रहा था वो खर्च नहीं होगा। सो यू अचीव अ कॉस्ट रिडक्शन। You try to re-engineer your processes, मतलब assume that whatever you are doing is wrong। ये आपका एसएम में भी रहेगा, बीपीआर, business process re-engineering or restructuring। Basically we go to assumption that whatever we are doing is wrong, try to redraw your processes from a clean slate। So it involves examining a business process and making substantial changes of how organization is operating। मतलब आपके प्रोसेसेस में कुछ फ्लॉ हो सकता है। एबीएम इज अ पावरफुल टूल फॉर मेजरिंग द बिजनेस परफॉर्मेंस, डिटरमिनिंग द कॉस्ट ऑफ बिजनेस आउटपुट एंड यूज एज अ मींस ऑफ आइडेंटिफाइंग। I'll give you a kick-ass example. Stock brokers, insurance companies or banks were spending lot of time as well as money on know your customer गाइडलाइंस, केवाईसी। कस्टमर को जब ऑनबोर्ड करना होता है तो कस्टमर को बोलना पड़ता था, बेटा तेरा पैन कार्ड दे, तेरा एड्रेस प्रूफ दे, तेरा फोटो दे, तेरा सिग्नेचर दे, तेरा इनकम का प्रोफाइलिंग दे। ये सारी चीजें उनको एक बैंक का ऑफिसर या इंश्योरेंस कंपनी का ऑफिसर आपके पास जाएगा, वो सारे क्वेश्चंस आपको पूछेगा, लिखेगा, डॉक्यूमेंट्स लेगा, सिग्नेचर लेगा, उसको स्कैन करेगा, अपलोड करेगा। एंड दिस वाज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम to onboard a customer. So the speed with which customers were onboarded was much slower. वैल्यू एडिशन क्या हो रहा है इससे? कुछ भी नहीं हो रहा है। कस्टमर के पास जाके तेरा पैन कार्ड दे, तेरा आधार कार्ड दे, तेरा एड्रेस प्रूफ दे और ये डॉक्यूमेंट दे, उससे कुछ हो नहीं रहा था। These processes were non value added activities. Majority of them have now
entirely onboarded these processes to digital platforms. उससे क्या हो गया? Software does everything automatically. So digitally ये process गया तो there is a mandate of law, in person verification होना चाहिए. कस्टमर जो है उसका फिजिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए. तो सॉफ्टवेयर क्या करता है? सॉफ्टवेयर बोलता है चल पहले तुम्हारा आधार कार्ड अपलोड कर, तुम्हारा पैन कार्ड अपलोड कर, वो चेक करेंगे हम गवर्नमेंट के डेटाबेस से, ओटीपी से ऑथेंटिकेट कर, इन पर्सन वेरिफिकेशन, चल तेरा कैमरा चालू कर, कैमरा चालू करके वो वहां पे सॉफ्टवेयर में एक लाइन बोलेगा, रैंडम लाइन हो सकता है, एक रैंडम नंबर दिखेगा सॉफ्टवेयर में, वो रैंडम नंबर तुम क्या करो पेपर पे लिखो और चोर जैसा ऐसा पेपर पे वो नंबर पकड़ के खड़े हो जाओ और वो आपका फोटो खींचेगा या आपको एक लाइन बोलने को बोलेगा, आपको बोलेगा ब्लिंक योर आई, लुक लेफ्ट, लुक राइट, लुक डाउन, लुक लाइक दिस, व्हाटएवर. क्या हो गया? ये सॉफ्टवेयर करवा रहा है नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी जो थी, जिसका कस्टमर एम्प्लॉय का जाने का टाइम, पेट्रोल पे खर्चा, उसका सैलरी प्लस कस्टमर का टाइम अवेलेबिलिटी, ये सारे चीज में आप दिन के एक एम्प्लॉय जो 5 या 6 कस्टमर ऑनबोर्ड कर पा रहा था, यहां पे अभी टाइम ही नहीं लग रहा है. लाइक कैश एग्जांपल इज अ Zerodha. Number of employees which Zerodha had and number of customers which Zerodha had prior to this digital in-person verification and now is same. पहले Zerodha के पास कुछ 1 million customers थे, now they are about 1 crore. Number of employees of Zerodha have remained same. क्यों? इन पर्सन वेरिफिकेशन चालू हो गया. इन पर्सन वेरिफिकेशन जो Zerodha को पहले जाके करना पड़ता था, कोई थर्ड पार्टी एजेंसी अपॉइंट करो या करो, वो सारा चीज क्या हो गया? जीरो हो गया ना. नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी, यू ट्राई टू आइडेंटिफाई हाउ यू कैन एलिमिनेट नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज विच डोंट एड एनी वैल्यू. तो उससे क्या हो गया? स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट हो गया ना स्पीड. दिस इज व्हाट हैज बीन पॉसिबल बिकॉज ऑफ दैट डिजिटल पब्लिक गुड्स क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट. बट कंपनीज ने क्या किया? उनका प्रोसेस ऑटोमेट किया, री इंजीनियर किया कि हम जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं वो सही है क्या. उसकी वजह से क्या हो गया? तुम्हारा नॉन वैल्यूएटेड एक्टिविटी चला गया, कॉस्ट रिडक्शन हो गया, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग हो गया. यू ट्राई टू बेंचमार्क योरसेल्फ विद समवन एल्स और यू ट्राई टू बेंचमार्क योरसेल्फ विद द स्टैंडर्ड दैट यू आर सेट फॉर अ कॉस्ट. एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट का पार्ट है. मैनेजमेंट इज नॉट डिटरमिनिंग द कॉस्ट, मैनेजमेंट इज अप्लाइंग वॉट एवर कॉस्ट यू हैव डिटरमिन्ड. एंड देन फाइनली वी टॉक अबाउट व्हाट? परफॉर्मेंस मेजरमेंट. ये इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है, वैल्यू एडेड एंड व्हाट? नॉन वैल्यूएटेड. वो मैंने यहां पर टेबल फॉर्म में दिया है. प्लीज डू दीज थियरी क्वेश्चंस. ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको इसको पढ़ने के लिए. एबीसी वर्सेस एबीएम, ये टाइम पास है. एबीसी रेफर्स टू टेक्निक ऑफ डिटरमिनिंग द कॉस्ट. एबीसी इज टू जनरेट इंप्रूव डेटा फॉर यूजिंग. एबीसी का काम क्या है? कॉस्ट का डेटा कैलकुलेट करो. इट स्टॉप्स एट कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट. वेयर एबीसी स्टॉप्स, एबीसी बिगिंस. तुम्हारा दिमाग जहां पे खत्म होता है वहां पे हमारा दिमाग शुरू होता है. ऐसे बकवास बॉलीवुड के डायलॉग्स मारने पड़े. So it refers to management philosophy that focuses on planning execution. These are actually interlinked with each other. There is no point in saying this is ABC, look this is ABM. It's all one integrated. ABM is much broader concept. It aims to use information generated by ABC. ठीक है. After cost computation, it further helps to reduce your cost. अभी क्या आएगा? Activities based budgeting. अबे साले बजट बनाना है, उसका काहे का एक्टिविटी? हर एक एक्टिविटी का बजट बनाओ. एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग क्या मतलब? आएगा थ्योरी क्वेश्चन. एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग इज एनालाइजिंग रिसोर्स इनपुट एंड कॉस्ट फॉर ईच एक्टिविटी. इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस रिक्वायर्ड. बजटिंग है ना, तो हर एक एक्टिविटी का बजट बनाने के तुमको. एक्चुअल रिजल्ट्स कैन बी कंपेयर्ड विद द बजटेड रिजल्ट्स. फिर मतलब व्हाट इज ग्रेट? Key elements: type of work to be done, quantity to be produced, cost to be incurred, to be done. क्यों बजट? ये मत करो, मतलब ये पागलपन है, ये पूरा बीकॉम है. आई एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन एबीसी टाइप ऑफ एक्टिविटीज एंड एबीएम के ऊपर शॉर्ट नोट एक्टिविटीज अंडर एबीएम. तो क्या एबीबी टाइम पास है? एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग कैन एनहांस द एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल फोरकास्ट. कुछ तो लिखना है यार. When automated ABB can rapidly and accurately produce a financial plans. कि बाकी चीजें नहीं कर सकती. ABB eliminates much of the needless work created by traditional budgeting techniques. But instead of making a budget for the organization, you make a budget for each activity. ये
एबीएम का ये पार्ट को याद रखना है। कॉस्ट ड्राइवर का एनालिसिस करेंगे हम, एक्टिविटीज का एनालाइज करेंगे और परफॉर्मेंस का मेजरमेंट करेंगे, और इससे हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट रिडक्शन हो जाएगा। वी विल बी एबल टू बेंचमार्क ourselves विद अदर्स, वी विल बी एबल टू री इंजीनियर आर प्रोसेसेस एंड परफॉर्मेंस का मेजरमेंट कर पाएंगे। थियरी क्वेश्चन। सो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया तो क्या करना है आपको, कॉस्ट ड्राइवर कैलकुलेट करो और उस कॉस्ट ड्राइवर को कॉस्ट ऑब्जेक्ट से लिंक करो। इसको गो थ्रू करने के लिए आपको क्या करना है, क्यू सीरीज के जो क्वेश्चंस है आपके रेगुलर नोट्स में वो, और जो एक मैंने पीडीएफ फाइल शेयर किया था पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस का ही है। सिर्फ सॉल्यूशंस देखो, सॉल्व करने में टाइम वेस्ट मत करो, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है वो, उससे कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं आएंगे आपको, राइट। अदर थिंग्स वी डिस्कस टुमारो, विल स्टार्ट अप विथ व्हाट चैप्टर, कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग देयर आफ्टर। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग ही हो, बट करना पड़ेगा, आएगा, मतलब वेरी हाई चांस।